Now, good morning, students. In the previous class of science, we are just discussing about the topic of nutrition. Now, how the nutrition that can be generally happens into the unicellular organism as well as multicellular organism, that we have to discussing. Also, we are discussing about how the respiration that can be done in animals and in humans. There should be lots of organs which should be involved in the process of the respiration, as well as we can discuss in digestion. Now, next topic about the nutrition and respiration, there is a transportation and excretion. Now, yesterday we were discussing about what do you mean by the transportation. Now, the substance which is absorbed into the one part of our body which can be transported to the another part of our body, generally that is called as a transportation. Okay. So, transportation is a part of the material as a part of nutrient which should be absorbed in one part of our body that can be synthesized and is transmitted to the another part of our body. Now, so what are the substances which in our body cell which require to survive? So, cell generally require the three things which should be survive in this formation of like oxygen, water and food. These are the three substances: oxygen, water and food that can be transported each and every cell of our body as a part of transportation, and in which through the cells which should be survive. So, it requires three substances: food, water and as well as oxygen. So, what are the nutritive substances that the human body we generally adopt through using the foods like cellulose, carbohydrates, fat, protein, lipids? These are the substances which the humans which should be get from using the different type of food substances. So, what do you mean by the transportation? So, releasing this formation of the energy from one part of our body to another part of our body, that is generally called as the transportation. Now, what do you mean by the transportation in plants? First, we are discussing about the transportation in plants, then we are discussing about the how the human body which generally involves to transportation this type of process. So, first of all, the two types of plants are there. One is called as the lower ordering of plants, one is called higher ordering of plants. So, higher order and lower order, these are the two type of plants which generally, plants also a part of the living organisms which generally require this type of substances as a part of nutrients which they should be absorbed from the water, food, oxygen, carbon dioxide from the atmosphere. So, the transportation that should be in a plants having a different type of cells which required. So, there is a two complex tissues which is involved into the transportation of this type of substances in a plants, which is called xylem and phloem. Okay, that we have already discussing into the 9th standard, how the xylem is responsible to conducting the water and how the phloem is conducting this type of food and other substances to the organ of the other plants. So, first we are discussing like the higher plant. Higher plant have a specific formation that possesses the specific cell tissues that is called xylem. So, xylem have a specific tissues which is generally involved to transportation of water into the plants. Now, the plants generally use the water from the roots which generally attach with the soils. Now, the roots which is generally attached with the soils, in which there is a root hairs which is also known as the epidemic cells which absorb this type of water, and by the diffusion process this water that can be transported by the heavily pressure of the diffusion that can be easily transmitted to the each and every part of the cell into the plants. So, xylem tissues that should be the organ plant which is interconnected by the forming continuously formations of the water conduction. So, xylem is responsible for conducting this type of formation. Now, xylem has three different formation, like we can say that xylem trachea, xylem vessels. These are the generally called as a structural component of xylem, xylem tracheates and xylem vessels. So, xylem is one of the part of the complex permanent tissues in a plants which is generally responsible to conducting this type of water substances to the plants which have a tracheates and vessel. Now, as the root cells which generally attach to the soil which generally absorb this type of water minerals, and that can be provided to each and every part of the cell. But what are the ions which is absorbed from the root have a less concentration. Okay, so that create the pressure. Concentration have create the pressure because one have having a heavily concentration of ions, one having a lower concentration of ions. So that lower and higher concentration of these ions into the plant root which generally create a large difference. So that generally difference is a part of creating a diffusion process in which that
partition of this soil which contain this water directly diffuse into the root cells, and that can be easily transported to the each and every plant. Now that is only we are discussing about the lower ordering of plant, because it have no any such large difference between the roots to leaves, because we can see that if the lower plants is there, lower plants have such a not a big difference between root and leaf, so they can be easily provide this type of pressure as a part of diffusion. So root that can be directly use this type of water from the soil, and directly that should be diffused to the leaves and stem as well as. But what about the higher plants? Higher plants have such a large difference between roots to leaves. Okay, if we seen that any neem tree or any formation of the trees which we are seeing that root and leaves, there is such a large big difference. So for that such a large big difference of the plants, the water is not being conducted by the using of this type of pressure. Okay, that's the osmotic pressure. So using that pressure, water is not conducted to the stem, to the leaves as well as the roots. So there is a specific tissues which generally conduct this type of water transportation, that is called xylem tissues. So xylem is generally, plants generally used to moving these formations to xylem upward to the higher plants. So the xylem is generally that kind of the complex connective tissues which is generally adapted to the each and every organ of the plant. Okay, so when the water that should be absorbed from the root, either directly higher plants, that can be moving by using the xylem tissue. Now if there is the formation, if when water is lost through the stomata, there is also loss of water that we can be seen into the part of the vapor, that is called as a transpiration process. Like our body, dehydration is there, if there is so much hot and humidity, sunlight is there, so our body also release the water vapors, because there is a scarcity becomes in our body of water, so that is called dehydration. Similarly, plants having that process of loss of water. So as a loss of water in a form of water vapor through the stomata of the plants, that can be process is called as a transpiration process, loss of water through the vapor, that is called as a transpiration. And that transpiration process, when the water that should be lost out, that water is present in where? Xylem vessels. The water which is present to the xylem vessel which lost through the stomata of the leaves as a form of pores of vapor, that is called as a transpiration process. So that's generally when the leaf that create the suction process, xylem provide the water. So xylem is generally responsible for conducting this type of water from the roots to the leaves. So that is the one process how that can be implemented. So water from the xylem which should be not only cells to root, that can be easily absorbed from the root and provided to the each and every part of the plants. So what about the transpiration process? That is generally called as the transportation of water through the xylem. Transpiration is same as it is. Now loss of water in a form of vapor through the vessels of the xylem as a form of vapor in an environment, that is generally called as the transpiration process. Now generally transpiration process is responsible to regulate the temperature of the plant body, because it should be regulate the temperature of plant body. Generally we see that stomata is responsible to conducting or losing this type of water vapor. Now water that can be enter in the plants through the leaves of stomata, that should be protected by the guard cells, as well as water that can be lost as a form of vapor. It is also known as a transpiration process, which is also guarded by the guard cells in the stomata. So as the stomata are opening into the daytime, transpiration pills becomes very major direct force into the xylem process. So daytime process ke andar when the sunlight is available, so that type of process of the loss of water in a form of vapor generally called as a transpiration process. So that we are discussing about the transportation of water. But what about the food? Because we know that in a photosynthesis process, plants generally they use the chlorophyll and prepare their food. They use the sunlight and convert it into that light energy into the chemical energy and prepare their food, that is part of the glucose which is stored into the ATP. So how this type of food that can be transported to each and every organ of the plant? How the food that should be transported? Because food is only prepared by the leaves, okay? And leaves how can be transported to the roots? Leaves. Also roots absorbs the ions, minerals from the soil and water, which is also necessary for the leaves and the stems. So how this type of transportation of food material and other mineral substances to the plants?
Now carbohydrate, generally we know that carbohydrate is a main part of the glucose in a plant, which should be synthesized by the leaf by processes by the photosynthesis process, which is using by the chlorophyll. Now from the green leaves, the photosynthesis product that produced what, that produced the food for the plant body. photosynthesis process में क्या होता है, food produced करते हैं. कौन produce करते हैं? Plants. They produce the food, and that photosynthesis product which is produce the food and which is transported to the each and every organ of the plant, which is called translocation. उसको हम क्या कहते हैं? ट्रांसलोकेशन कहते हैं. तो जो फूड प्रोड्यूस्ड होता है प्लांट के थ्रू, जो लीव्स उसको प्रोड्यूस करते हैं एज अ पार्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, वो प्लांट के हर एक ऑर्गन तक उसको ट्रांसपोर्टेड किया जाता है, जिसको ट्रांसलोकेशन प्रोसेस कहा जाता है. जैसे जाइलम के अंदर जाइलम का ट्रैकेट और जाइलम का वेसल्स है, वैसे ही फाइलम्स के अंदर हम फाइलम्स के अंदर देखते हैं कि वहाँ पे सीव ट्यूब, सीव सेल्स और एक और सब्सटेंसेस होता है जिसको वैक्यूलर ट्यूब्स भी कह सकते हैं, कैंपेनियन सेल भी उसको कहा जाता है. तो दैट इज जनरली कंसिडर्ड बाय द फाइलम. तो फाइलम जनरली विद हैविंग अ कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट इज व्हाट, इट इज अ पार्ट ऑफ ग्लूकोज. कार्बोहाइड्रेट इज व्हाट, इट इज अ पार्ट ऑफ ग्लूकोज. So carbohydrate with the phylum generally used to transport the amino acid or several type of enzymes which is released by the plants. Also synthesize the food as a formations of the leaves which can be transported to each and every organ of the plant. So translocation in plants will take both direction. It should be moving from upward to downward direction, also moving from downward to upward. How that should be possible? For example, now generally leaves, we synthesize the food as a part of carbohydrate which can be provided to the root. So that should be upward to downward. Similarly, we seen that the roots are synthesized some of the ions of minerals which can be easily transported to the leaves. So it should be a downward to upward. So translocation, it can be done into the both direction, upward to downward and downward to upward. Now that formation of energy to transporting this type of substances will also require energy, because हमने पहले भी discussion किया है, for any work of living organism that can be done which generally require the energy. कोई भी काम अगर आप करते हैं तो that require the energy. So plants also require the energy to translocate this type of food substances, so that energy is generally they can be obtaining from the ATP. So when the material like glucose, fructose and sucrose which should be implemented to the phylem tissues, and phylem tissues that can be implemented formations to the vascular tube and plants that can be absorb this type of substances. So this type of substances of the carbohydrate which allows the food which can be easily transported to the each and every part of the plant body. So that is generally we can see that the formation of the transportation into the plants. So this is the topic of the transportation. तो सिंपल ठीक यहाँ पे आपको समझना है कि ट्रांसपोर्टेशन मीन्स क्या होता है और प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है. तो ट्रांसपोर्टेशन मतलब सेल के एक पार्ट के अंदर जो एनर्जी सिंथेसाइज होती है, उस एनर्जी को प्लांट ऑर्गन या फिर बॉडी ऑर्गन के दूसरे सब्सटेंसेस तक जो प्रोवाइड किया जाता है, मूव किया जाता है, उसको ट्रांसपोर्टेशन कहा जाता है. प्लांट के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उसमें दो अलग अलग टिश्यूज होते हैं. जो जाइलम है वो वाटर को ट्रांसपोर्टेड करता है, जबकि फाइलम है वह इस तरह के जो फूड प्रिपेयर करते हैं लीव्स और जो बाकी के एंजाइम्स और मिनरल्स है उसको ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है. जिसमें मैंने आपको समझा है जाइलम्स जो है वो जाइलम ट्रैकेट और जाइलम वेसल्स को कंटेन करता है, जबकि लोअर ऑर्डरिंग ऑफ फ्लावर जो प्लांट्स है उसके अंदर क्या होता है, विद द प्रेशर दैट कैन बी इजीली प्रोवाइड दिस टाइप ऑफ द वाटर टू द ईच एंड एवरी ऑर्गन. लेकिन हायर प्लांट्स के लिए जाइलम्स रिस्पॉन्सिबल है. सिमिलरली फाइलम टिश्यूज के बारे में समझा है. फाइलम टिश्यूज जो है जो फूड कार्बोहाइड्रेट प्रिपेयर करता है लीव्स, उसको अलग अलग ऑर्गन तक भेजते हैं. उसमें भी आप देखा तो सीव सेल है, सीव ट्यूब है, वैस्कुलर ट्यूब्स है जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फाइलम टिश्यूज के जो फॉर्मेशन होते हैं उसको हर एक ऑर्गन तक प्लांट के थ्रू प्रोवाइड करने को. सो दैट इज अबाउट जाइलम एंड फाइलम which is responsible to transport all the substances like water, minerals, enzyme, hormones, ions, which is generally transported to the each and every organ of the plant through that tissues of xylem and phylum. So that is called transportation that can be done into the plants. Now very important topic for the board examination, transportation in human beings. That is asked in a 4 marks question. How the transportation in human beings that can be done. So I'll just give the 2 charts on my board. One is the chart of human heart, and there is the circulation of blood into the human heart. This is the tooth formation. Now
it should be also asked in a 2 marks question. Explain the structure of human heart. That should be asked in a 2 marks question. Also, it should be asked how the circulation that can be done into the human heart. This is a 2 different question. How the circulation that can be done into the human heart, that is another question which is asked in a 2 marks. Or it should also ask in a 2 marks, explain the structure of human heart. But if the question will ask, explain the transportation in human beings, which ask in a 4 marks, in which you can explain all the formation of the human heart as well as how the circulation of the blood that can be done into the humans. So, first of all, see that here is the one figure of a human heart is given. Now, human heart is generally in a shape of conical shape. ह्यूमन हार्ट का जो शेप होता है वो कॉनिकल शेप होता है और उसका जो साइज होता है लाइक अ क्लोज फिस्ट, ये जो बंद मुट्ठी करते हैं फिस्ट की जो साइज होती है, सिमिलरली साइज जो होती है वो ह्यूमन हार्ट की होती है. ह्यूमन हार्ट इन अ कॉनिकल शेप एंड साइज लाइक अ क्लोज फिस्ट. ओके, ये उसका आपको याद रखना है कि शेप और साइज क्या है. द शेप एंड साइज ऑफ ह्यूमन हार्ट, द ह्यूमन हार्ट इन अ कॉनिकल शेप एंड इट्स साइज लाइक अ क्लोज फिस्ट. दैट इज अबाउट द ह्यूमन हार्ट. नाउ, where the location of human heart, where it can be found in our body, how we can be find where is the structure of the human heart. So generally human heart is located in a small space between the 2 lungs and slightly towards the left side. So human heart is generally located in a very small space between 2 lungs. हमारे जो 2 lungs होते हैं, जैसे कल भी आपको मैंने रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में समझाया था, जो ब्रोंकिस डिवाइडेड इनटू द लंग्स. सो वो जो लंग्स के बीच में थोड़ी सी जो स्पेस होती है वहां पे क्या होता है, आपका ह्यूमन हार्ट होता है स्लाइटली ऑन अ लेफ्ट साइड. सिंपल एकदम याद रखना है. ह्यूमन हार्ट इज इन अ कॉनिकल शेप एंड इट साइज लाइक अ क्लोज फिस्ट. इट इज लोकेटेड इन अ वेरी स्मॉल स्पेस बिटवीन द 2 lungs स्लाइटली टुवर्ड्स ऑन अ लेफ्ट साइड. ठीक है, ये उसका आपका लोकेशन हो गया. अभी ह्यूमन हार्ट के अंदर आप अगर यहाँ पे देखेंगे तो अलग अलग तरीके के पोर्शंस दिए हैं. यहाँ पे आपको 2 चैम्बर्स दिए हैं, नीचे 2 चैम्बर्स दिया है, यहाँ पे एक लाइन जो है चैम्बर्स को डिवाइड कर रहा है. अलग अलग तरीके के सुपीरियर वेना कावा है, पल्मोनरी आर्टरीज है ना, अलग अलग तरीके के वाल्व्स है. तो ह्यूमन हार्ट का जो मेन फॉर्मेशन होता है वो क्या होता है. जनरली हम देखते हैं कि हमारे बॉडी के अंदर, इन अवर बॉडी, 2 type of respiratory gases there. One is the carbon dioxide, one is the oxygenated. So carbon dioxide and oxygen that are transported by the blood, क्योंकि हमारा ब्लड जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को भी कंटेन करता है और ऑक्सीजन को भी कंटेन करता है. तो दैट कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन दैट इज ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड इन अवर बॉडी, हमारे बॉडी के अंदर वो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के थ्रू हमारे बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्टेड होता है. इसके लिए human heart that can be divided into the 4 structure. Why 4 structure? It is generally divided into the 4 structure to prevent the mixing of the oxygen rich blood and the deoxygenated blood, carbon dioxide containing blood. So human heart generally are divided into the 4 chambers because it generally used to prevent the mixing of deoxygenated blood and oxygenated blood, because कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन बोथ आर ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड, वो ब्लड के थ्रू ही ट्रांसपोर्टेड होता है. सो ह्यूमन हार्ट के अंदर ऐसे 4 चैम्बर्स होते हैं जो इस तरह के ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को प्रिवेंट होने से उसको रोके. इसके लिए ह्यूमन हार्ट जो है 4 चैम्बर्स में डिवाइडेड होता है. जो अपर चैम्बर्स होता है उसको एट्रियम कहा जाता है. ठीक है, द अपर चैम्बर्स ऑफ ह्यूमन हार्ट दैट इज कॉल्ड एट्रियम, लोअर चैम्बर ऑफ ह्यूमन हार्ट दैट इज कॉल्ड वेंट्रिकल. ये जो 2 चैम्बर्स दिख रहे हैं आपको, 2 चैम्बर्स, दैट इज कॉल्ड एट्रियम, और ये जो डाउन साइड दिख रहे हैं उसको हम कहते हैं वेंट्रिकल्स. ठीक है, तो एक होता है लेफ्ट एट्रियम, एक होता है राइट एट्रियम, एक होता है लेफ्ट वेंट्रिकल, एक होता है राइट वेंट्रिकल. वेरी इजी. ह्यूमन हार्ट दैट इज डिवाइडेड इनटू द 4 चैम्बर्स. जो अपर 2 चैम्बर्स है विच इज कॉल्ड एट्रियम, लोअर 2 चैम्बर्स है उसको हम कहते हैं वेंट्रिकल्स. यानी लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल. ठीक है, अभी ये सारे जो एट्रियम्स की जो वॉल होती है, द वॉल ऑफ एट्रियम विच इज वेरी थिन, वो काफ़ी पतली होती है, और जो वेंट्रिकल्स की जो वॉल होती है वो काफ़ी थिक होती है. द वॉल ऑफ वेंट्रिकल्स, दिस इज द वॉल ऑफ वेंट्रिकल्स, इज वेरी थिक, और वॉल ऑफ एट्रियम इज वेरी थिन. ओके, तो एट्रियम की वॉल काफ़ी थिन है जबकि वेंट्रिकल की वॉल काफ़ी थिक होती है. अब ये जो ब्लड का फ्लो होता है, फॉर द फ्लो ऑफ ब्लड इनटू द ह्यूमन हार्ट, वो कहाँ से कहाँ होता है, हमेशा लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर ही होता है.
और उसको कौन कंट्रोल और रेगुलेट करता है? उसको बाइकप्स्ड वाल्व रेगुलेट करते हैं, ठीक है। देयर इज आल्सो अ वाल्व व्हिच इज कॉल्ड बाइकप्स्ड वाल्व व्हिच जनरली यूज्ड टू रेगुलेट द फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम लेफ्ट एट्रियम टू लेफ्ट वेंट्रिकल। वैसे ही राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल के अंदर जो ब्लड का फ्लो बैक होता है उसको कंट्रोल कौन करता है? ट्राइकप्स्ड वाल्व कंट्रोल करता है। वो भी चेक करता है कि इट शुड बी आल्सो प्रिवेंट दैट फ्लो बैक ऑफ ब्लड, उसको भी कंट्रोल कौन करता है? ट्राइकप्स्ड वाल्व करते हैं। और ये चारों वाल्व जो लाइन से डिवाइडेड होते हैं उसको हम सेप्टा कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ सेप्टा। सो ह्यूमन हार्ट इज जनरली अ मेन ऑर्गन विच अ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बॉडी, ठीक है। तो ह्यूमन हार्ट जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट सर्कुलेटरी सिस्टम है जिसको हम ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर। ये केवल ह्यूमन हार्ट का स्ट्रक्चर है। क्लियर हो गया? फिर से एक बार आपको समझाता हूं, फिर हम सर्कुलेशन पे जाएंगे। ह्यूमन हार्ट is in a conical shape and its size like a closed fist, right? It's located between a very small space between the two lungs slightly on a left side. Now carbon dioxide and oxygen, both gases are transported by the blood. So human heart is divided into the 4 chambers to prevent the mixing of the oxygenated and deoxygenated blood into the human body. The 4 chambers, which is known as the 2 upper chambers and 2 lower chambers. 2 upper chambers is known as the atrium, while the 2 lower chambers is known as the ventricles. So left atrium, left ventricle, right atrium, right ventricle. Now the wall of atrium is very thin, where the wall of atrium is very thick, as well as the lines which should be divided the 4 chambers, which is called as a septa, that is called as a septa. The flow of the blood which is moving from left atrium to left ventricle, which is controlled and regulated by the bicuspid valve. Similarly, flow of blood from right atrium to right ventricle, that should be tricuspid valve. Also tricuspid valve is generally used to prevent the flow back of blood, यानी कि एट्रियम से वेंट्रिकल, वेंट्रियम से फिर से लेफ्ट टू राइट में ना मिक्स हो जाए, उसको प्रिवेंट करने का काम भी कौन करता है? ट्राइकप्स्ड वाल्व कहता है। सो ह्यूमन हार्ट इज मेन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बॉडी। तो ये आपका पूरा जो टॉपिक है दैट शुड बी इन अ फॉर्मेशन ऑफ द ह्यूमन हार्ट, दैट इज अ पार्ट ऑफ द ह्यूमन हार्ट, ठीक है। तो क्लियर हो गया आपको ह्यूमन हार्ट के बारे में। एक और लास्ट टॉपिक डिस्कशन कर लेते हैं कि ये जो ह्यूमन हार्ट जो है ब्लड सर्कुलेशन कैसे करता है, हाउ द ब्लड सर्कुलेशन दैट कैन बी डन इनटू द ह्यूमन हार्ट। देखिए पहले हमने डिस्कशन किया है तो हमारे बॉडी के अंदर 2 तरीके के ब्लड्स है, वन इज द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, एक होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। लेकिन हमारे बॉडी के लिए सबसे रिस्पॉन्सिबल क्या है? आपके लिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिस्पॉन्सिबल है। तो डीऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे बॉडी के अंदर कैसे रेगुलेटेड ट्रांसपोर्टेड होता है? सो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द वेरियस ऑर्गन, हमारे बॉडी के अंदर अलग अलग ऑर्गन है, जैसे हैंड है, स्टमक है, हार्ट है, ब्रेन है, लेग है, स्टमक है, लीवर है, अलग अलग ऑर्गन है। सो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी विच शुड बी रिसीव्ड बाय द राइट एट्रियम। हमारे बॉडी के जो डिफरेंट ऑर्गन्स है, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गन्स इन आवर बॉडी विच रिसीव्स द ब्लड, वो ब्लड को रिसीव कैसे करेगा? राइट एट्रियम के थ्रू रिसीव करेगा। और उसके लिए 2 सब्सटेंसेस सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, यहाँ पे आपको मैंने दिखा है, ये सुपीरियर वेना कावा है, दैट इज सुपीरियर वेना कावा, वो सबसे रिस्पॉन्सिबल होता है। ऐसे एक इन्फीरियर वेना कावा भी आता है, सुपीरियर और इन्फीरियर वेना कावा, ठीक है। यहाँ पे आपको दिया होगा फिगर्स के अंदर सुपीरियर फॉर्मेशन ऑफ सुपीरियर वेना कावा, ये जो है वो इसमें इंप्लीमेंट करता है और ये इंप्लीमेंट करता है। सो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द वेरियस ऑर्गन्स दैट शुड बी कलेक्टेड बाय द, कहाँ पे आता है वो? राइट एट्रियम के अंदर आता है और उसको कैरी कौन करता है? सुपीरियर इन्फीरियर वेना कावा। सो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द वेरियस ऑर्गन दैट शुड बी कैरीड टू द राइट एट्रियम विच शुड बी यूज्ड बाय द सुपीरियर इन्फीरियर वेना कावा। तो जैसे राइट एट्रियम के अंदर अभी यहाँ पे कौन सा ब्लड आया है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज हियर इनटू द राइट एट्रियम। अलग अलग हमारे ऑर्गन से वो ब्लड को कैरी करता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे? ये राइट एट्रियम के अंदर। उसको कौन कैरी करके लेके आता है? सुपीरियर और इन्फीरियर वेना कावा। ये जो 2 दिख रहे हैं आपको, सुपीरियर और इन्फीरियर वेना कावा, दैट कलेक्ट द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द वेरियस ऑर्गन वेयर टू द राइट एट्रियम। सिमिलरली अभी जैसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पे आ रहा है, वैसे ही यहाँ पे लेफ्ट एट्रियम के अंदर सिमिलरली एट द सेम टाइम द लेफ्ट एट्रियम रिसीव्स द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स थ्रू द पैल्मोनरी वेन्स। ये जो पैल्मोनरी वेन्स दिख रहा है ना, इस पैल्मोनरी वेन्स के थ्रू लेफ्ट एट्रियम के अंदर क्या आएगा?
ऑक्सीजनेट ब्लड आएगा, किसके थ्रू? लंग्स के थ्रू। फिर से एक बार समझाऊं कि राइट एट्रियम जो है वो डीऑक्सीजनेट ब्लड को कैरी करता है फ्रॉम द डिफरेंट ऑर्गन थ्रू द सुपीरियर इंफीरियर वेना कावा। एट द सेम टाइम जो लेफ्ट एट्रियम है वो रिसीव करता है ऑक्सीजनेट ब्लड फ्रॉम द लंग्स थ्रू यूजिंग द पल्मोनरी वेन्स। तो अभी लेफ्ट एट्रियम और राइट एट्रियम दोनों के अंदर ब्लड आ गया। लेफ्ट एट्रियम के अंदर ऑक्सीजनेट ब्लड है, राइट एट्रियम के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। अभी लेफ्ट एट्रियम का जो ब्लड होगा वो कहाँ जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर जाएगा। सिमिलरली राइट एट्रियम का ब्लड कहाँ जाएगा? राइट वेंट्रिकल के अंदर जाएगा। कब जाएगा? व्हेन द ब्लड in the left atrium and the right atrium that received by as a part of oxygenated deoxygenated, the wall of atrium that becomes contrast and it can be flow the blood from left atrium to left ventricle और right atrium से right ventricle के अंदर। जैसे फिर ventricle के अंदर blood आता है, left atrium और right ventricle के अंदर जैसे blood आता है तो ventricle की wall भी क्या होती है? contrast होती है। और contrast होने के बाद now all this type of left and right ventricle are contrast and generally blood entered through the lungs। lungs के अंदर blood enter होगा किसके थ्रू? इस ऑटा के थ्रू। जैसे वेंट्रिकल के अंदर ब्लड आता है वो कहाँ रिलीज करेगा? लंग्स के अंदर रिलीज करेगा थ्रू द ऑटा। और लंग्स क्या काम करेगा? इन द लंग्स जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड विच इट बी रिलीज फ्रॉम द ब्लड, और ऑक्सीजन जो होता है वो हमारे बॉडी के अलग अलग ऑर्गन तक डिफ्यूज होता है थ्रू द ह्यूमन हार्ट। तो जो सेपरेशन देखने को मिल रहा है ब्लड का, इट शुड बी रिक्वायर द वेरी हाईली एफिशिएंट फॉर्मेशन हमारे बॉडी के लिए। जैसे बर्ड्स है, मैमल्स है, ये सारे जो ऑर्गन्स होते हैं इस तरह के हाईली एफिशिएंट एनर्जी को रिक्वायर करते हैं जो हमारे बॉडी के टेम्परेचर को कंटिन्यूसली मेंटेन करते हैं। तो दैट इज अबाउट सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। क्लियर कि कैसे लेफ्ट एट्रियम के अंदर ब्लड आया ऑक्सीजनेटेड, कैसे राइट एट्रियम के अंदर ब्लड आया डीऑक्सीजनेटेड, एट्रियम से वेंट्रिकल में कैसे गया, फिर वेंट्रिकल से कैसे वो लंग्स तक जाता है थ्रू द ऑटा, लंग्स उसके अंदर के CO2 को रिलीज करता है, O2 को डिफ्यूज करता है हमारे बॉडी के अंदर। जो ये सब पूरा रिक्वायरमेंट होता है, कंटिन्यूसली हाईली एफिशिएंट एनर्जी रिक्वायर होती है जो हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करता है। ठीक है, तो ये जो अभी हमने डिस्कशन किया है, दो टॉपिक का डिस्कशन किया। वन इज ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स जिसमें जाइलम और फाइलम, और ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन जिसमें ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम, ह्यूमन हार्ट का स्ट्रक्चर क्या है और कैसे पूरा का पूरा जो ब्लड है वो फ्लो होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर। ठीक है, तब अभी नेक्स्ट टॉपिक जब हम डिस्कशन करेंगे विच इज अबाउट द एक्सक्रीशन, हाउ द एक्सक्रीशन दैट शुड बी डन इनटू द प्लांट्स, हाउ द एक्सक्रीशन दैट शुड बी इन एनिमल्स। तो वो लास्ट टॉपिक होगा चैप्टर नंबर 6 लाइफ प्रोसेस का। तब तक आप इसका प्रिपेयर करें, डिस्कशन करें। तब तक बाय, कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक अबाउट द एक्सक्रीशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। ओके, बाय।